Hey guys, welcome to Kela Adventure. And today we are at Diggy Hill. We have already covered this trek, but the purpose of today's trek is to basically conduct an interview of two special guests. They are very special because they have been to a lot of trekking places. They have done high altitude trekking. So today we will try to understand what's their experience on these treks. So stay tuned. I'll keep you posted. Okay, so guys, today we have two special guests, Vikram Hi. and Umesh. So they are going to share their experience regarding the different treks that they have done in past couple of years. So Vikram, how it all started? ये सब कीड़ा कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? somehow ये कीड़ा बहुत पहले से था. ये कीड़ा कब जगा वो जानना जरूरी है. हाँ. तो हम लोग स्टार्ट किए रात में, भैया नाइट आउट करना है. हाँ. तो कहाँ जा सकते हैं? सिटी में तो कोई जगह नहीं है. करेक्ट. घर के पास पहाड़ है. स्टार्ट किया वहाँ जाने से और धीरे धीरे कीड़ा बड़ा होता गया और अब ये कीड़ा हमको हिमालय तक लेके जा रहा है. वाह, क्या बात है. उमेश, तुम्हें कहाँ से आया ये कीड़ा ट्रेकिंग का? We are from Pune, so I don't think we are doing anything exceptional. Yes. पुणे में ये कल्चर ही है. So I remember my first time जब मैं 8th क्लास में था, तो तब हम लोग स्कूल के सभी दोस्त स्कूल के बाद कभी ऐसे साइकिल पे यहाँ से थोड़ा दूरी पे एक और पहाड़ है, वहाँ पे जाते थे. तो तभी से ऐसे छोटे मोटे पहाड़ तो हम लोगों ने चढ़ना शुरू ही कर ही दिया था. और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए पहाड़ों का स्तर भी और ऊपर जाता गया. So definitely पुणे के इन एंड अराउंड तो देर आर सेवरल हिल्स और पुणे का एज यू राइटली सेड ये कल्चर ही है दैट पीपल लव डूइंग ट्रैकिंग स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन. बट यहाँ से हिमालय कैसे पहुँच गए? हिमालय की जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ. मेरा हिमालय का पहला एक्सपीरियंस और पहला और एकमात्र एक्सपीरियंस वाज बैक इन 2011. तो तब आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ वन ऑफ अदर फ्रेंड्स रंजन. तो ही प्रपोज कि चलो हम लोग नेपाल चलते हैं घूमने के लिए. करेक्ट. तो तब हाँ ऐसे कभी सोचा तो नहीं था कि हिमालय जाके ट्रैक करेंगे. बट प्लान बना और ट्रैकिंग हम लोग सब एंजॉय करते ही थे. तो राइट. तब हम लोगों का प्लान बना. पहले आई डोंट नो ये जगह का नाम याद नहीं आ रहा. दूसरा स्पॉट हम लोगों ने डिसाइड किया था, बट अल्टीमेटली समय के अभाव के कारण फिर हम लोगों ने लास्ट में चेंज करके एक गोरे पानी वहाँ पे गए थे हम लोग. राइट. एंड देन आई थिंक रंजन ने तो एवरेस्ट बेस कैंप भी किया उसके बाद. और विक्रम, तुमने तो चादर ट्रैक किया है, केदारकंठा किया है. सो टेल अस अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस. कैसा रहा? यहाँ से कैसे वो डिफरेंट है ट्रैक्स एंड व्हाट यू हैव लर्न इन दोज ट्रैक्स? So I think the basic difference is the height. So in this trek around Pune, you are maximum 1 hour, 2 hours away from the civilization. Right. The height is not great. Although some of the treks around Pune are very dangerous, like Alang Malang or you say Kalavanti Dul, but the difficulty level and the support which is
needed in case of emergency Mm-hmm. is something you don't get in Himalayas. Mm-hmm. So just to share an example, in Chadar, we walked on the river for almost 5 days. Mm-hmm. And if anything happened, or in case of emergency, the only way back is to walk back or call an helicopter. Mm. So first is the height, like I said. Yeah. The highest peak in Maharashtra, Kalsubai. Kalsubai, which we did somewhere 3-4 years back, Yes. is roughly 1600 meters, Yeah, 15 to 1600. 1500 meters. Yes. And in Himalayas, you start at 1000 meters. Correct. So Yeah, you you're start at 1000 meter, you go up to 4K, 5K, yes. 6K while trekking. Beyond 6K, I think you need to have mountaineering experience and certification. Correct. So the amount of oxygen is very less. Mm-hmm. Second, the extreme climate conditions. Mm-hmm. Here in Pune, the minimum temperature you can face is 9 degrees or 8 degrees, that too in night. That you can brave using clothing for normal jacket. In Himalayas, at some point of time we faced minus 35 degrees Celsius. Mm-hmm. Right. So Himalaya is kind of Mecca or the extreme for trekking and adventure sports. That is what I would say. Correct. Absolutely. I think Himalayans का तो कोई जवाब ही नहीं है. The kind of view. Although we have not scratched the surface for Himalaya, हम लोगों ने अभी बहुत छोटे-छोटे ट्रैक किए. There are multiple things. Right. And I think even if we do every track a month, we would not be able to explore Himalayan tracks. So guys, I think अपना next trek जो है वो ब्रह्मताल है, which we are going to do in November. So tell us more about that. What kind of preparation you guys are doing? क्या चल रहा है अभी? ब्रह्मताल नियर अबाउट सेम हाइट है जो हम लोगों ने लास्ट किया था केदारकंठा. So we are doing nothing special. As a weekly trek we would be doing just to build up some endurance. Right. And जैसे जैसे पास में पहुंचेंगे ट्रैक के तो थोड़ा सा हम लोग अपना ट्रैक का लेवल भी स्ट्रेच करेंगे, थोड़े और डिफिकल्ट ट्रैक्स करेंगे यहाँ पे. करेक्ट. आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने थोड़े ब्रीदिंग पे कंट्रोल होना चाहिए ड्यूरिंग दीज ट्रैक्स. सो थोड़ा वॉक करो, थोड़ा सा हल्के फुल्के हाइकिंग करते रहो. दैट विल ब्रिंग प्राणायाम करो. योगा इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. सो टेल मी मोर अबाउट लाइक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स. काफ़ी सारे बिगनर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें इस ट्रैकिंग पैशन में जाना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए. इज़ देयर एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स? हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स में पिछली बार जैसे हम लोग गए थे तो कुछ लोग थे जो ज़रूरत से ज़्यादा वेट कैरी कर रहे थे. तो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड. जो ज़रूरत है उतना ही सामान लो. ऐसा भी नहीं कि जो ज़रूरत है वो भी छोड़ दो. राइट. बट ज़रूरत से ज़्यादा भी मत लो. मोस्टली इन सभी ट्रैक पे ऑर्गेनाइज ट्रैक्स है तो खाना और रहना सब इट इज़ टेकन केयर ऑफ. तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ब्लैंकेट्स एंड राइट. काइंड्स ऑफ थिंग. तो ये सब चीज़ें मत लो. और बाकी तो हाँ अपनी एंड्योरेंस थोड़ा बिल्ड करते रहो, क्योंकि यहाँ पे हम जो कुछ घंटों के लिए सफ़र करते हैं या जितना एफर्ट जाता है वहाँ पे कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन तक तुम्हें एक के बाद एक पैचेस पे ऊपर चढ़ते जाना पड़ता है. राइट. सो विक्रम, यू हैव डन चादर ट्रैक जहाँ पे टेम्परेचर -30-35 डिग्री तक जाता है. सो वहाँ पे क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए? Minus 35 degrees Celsius, you have to be extreme cautious in that layer of clothing you are carrying. So generally, for such temperatures, you need to have 4 layers. You need to have 4 layers: thermals, t-shirt, of a full sleeve t-shirt, mostly dry fit, then one more layer of jacket, and lastly a fleece jacket. राइट. और स्नो ट्रैकिंग में आई थिंक गमबूट्स वगैरह वो सब भी इम्पोर्टेंट है. बट यूजुअली यू गेट इट. हाँ, these thing is something that you will get whenever you register for a trek. You can get there itself. You can prepare. You can get a list and everything. But the best preparation you need to do is prepare your mind. Right. You need to
you need to believe that you can do this trek. Right. Then only I think nothing will stop you. Neither your physical endurance, neither the Yes. kind of clothes you are carrying. If Mm. you are certain that you are going to finish this trek, then I think you will finish this trek. Yeah, definitely. I think mindset बहुत important है when you are going for high altitude treks, because there are times when you will think about giving So up. just to quote an example, one of our friend Anuj, he was having kidney stone pain before Yeah. the start of Chadar Trek. Yes. And this person was in hospital on the night before when we had to start the trek. Right. And somehow this person with his determination and everything completed the trek. So, Yes. It's so all about it's all about your mind and heart, how you believe. correct. Another example is our own Yogi. You ये एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ने के पहले Yeah. डेंगू से ग्रस्त त्रस्त थे. थे और जस्ट थोड़ा शुरू होने के पहले इन्होंने थोड़ा रिकवर किया एंड Yes. स्टिल ही वेंट अहेड और कंप्लीट करके आए. वो तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा. Correct. Correct. So I think we all are one of the examples. We all are in late 30s. Some of us are overweight. Some of us are not that prepared. But we still believe that we can do and complete the trek. And I think at this age, completing the trek with all the overweight, all the age factor is something we should have a hats off to all of us. Yes, absolutely. So thank you guys. Thank you for sharing your experience. I hope वापस से हम फिर कभी connect करेंगे and we'll talk more about high altitude trekking experiences, different challenges. There are a lot to cover when we talk about trekking. I think it's been more than 10-15 years since we are doing such activity. So I know you guys can talk for hours, but I think this is good for now. Thank you. Thank you very much. Bye everyone. Thank you.